So today we will be discussing on the topic of respiratory system. So by hearing the word respiratory system, what comes to your mind? आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलने से क्या दिमाग में क्या आ जाता है? What comes to your mind if I say respiratory system? Anyone? Breathing. Breathing. Okay. Okay, yes, it's breathing. When you breathe in, when you breathe out. So with the help of what? With the help of your lungs. It's not it. So uh, all this system comes under the respiratory system. So the lungs is responsible for your breathing system. That is the respiratory system. So today we will be discussing about it. तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सीखेंगे। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग्स, ये जो मेन ऑर्गन है जो कि हम लोग का ब्रीदिंग सिस्टम सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, ओके। सो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, what do they do? Means how do you breathe? You breathe in oxygen. When you breathe in oxygen, when you breathe in, you breathe in oxygen. And when you breathe out, what do you breathe out? Carbon dioxide. Carbon dioxide, which is what? Which is harmful for your body, you can say. So you breathe out that thing. I mean, you expel it out from your body. So what happens here? Exchange of gas happens here. That is in your lungs. Understand? So in the respiratory system, these things mainly occurs. That is, you breathe in oxygen and you breathe out carbon dioxide. Carbon dioxide, which is harmful for your body, you can say. And in which organ is mainly responsible for you to breathe? Your lungs. So your lungs, what do? They helps in exchanging of gas. Exchanging of gas like what? Carbon dioxide and oxygen. Understand? So this is it. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, जब तुम लोग सांस लेते हो अंदर, वहाँ पे ऑक्सीजन तुम लोग अंदर इनहेल करते हो, सांस लेते हो, ठीक है। और जब एक्सपेल करते हो, जब बाहर करते हो, उसको बोलते हैं सांस बाहर निकलना। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक है, जो एक्सपेल होता है, बाहर आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? लंग्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो लंग्स है, गैस एक्सचेंज होता है। तो कौन सा गैस एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों गैस एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? Is it clear about this part? Yes, ma'am. Okay. So in this respiratory system, you will get two types of respiration. One is external respiration and the other is internal respiration. So हम लोग को ये respiratory system में दो respiration मिलेगा। एक है external respiration और दूसरा है internal respiration। ठीक है? So in this external respiration, that is breathing out, what will you find? You will find that there is exchange of gas in between where? In between your blood and your lungs. Understand? In between your blood and your lungs. You will find it. Okay? In between your lungs and your blood, you will find that there is exchange of gas. And in this breathing out, that is external respiration, what will you find? You will find that your chest will contract. It will become small, it will become compressed when you breathe out. And your diaphragm, it will relax. Listen, it will relax.
And in the next one, that is breathing in, that is internal respiration. What will you find? You will find that there is exchange of gas in between your blood and your what cells. That is internal respiration. What happens here? Your chest. This is your chest. It will expand. Expand means it will grow in size. Okay, it will grow in size. It will expand. And what will you find here? You will find that your diaphragm. This is your diaphragm. It will contract. It will become small. It will be compressed. तो यहाँ पे क्या होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में यानी कि ब्रीथिंग आउट पे यहाँ पे दोनों गैस मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है तो कहाँ कहाँ पे होगा ब्लड और लंग्स के बीच में वो होगा एक्सचेंज ऑफ गैस होगा और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे चेस्ट ये जो चेस्ट है कंट्रैक्ट होगा मतलब कंप्रेस छोटा हो जाएगा और डायफ्राम रिलैक्स होगा ठीक है और नेक्स्ट क्या है ब्रीथिंग इन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या मिलेगा यहाँ पे ब्लड और सेल्स के बीच में वो होगा संबंध होगा और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे चेस्ट ये जो चेस्ट है एक्सपांड होगा मतलब बड़ा हो जाएगा ये चेस्ट और ये जो डायफ्राम है छोटा हो जाएगा कंट्रैक्ट मतलब कंप्रेस हो जाएगा इज इट क्लियर एवरीवन Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay so next is upper respiratory tract. So in the upper respiratory tract, what are the organs or what are the things that you will find in it? So the first one is mouth and nose and also nostrils. So this is your mouth, this is your mouth. So this is your mouth, this is your nostrils and this is your nose. So what happens here? Here air enters inside this, air enters in, through this and after this what happens? The air will enter it will go to the lungs. Is it clear? So that they can go inside the lungs now. Means the air passes through these nostrils, nose and mouth. Is it clear? तो next क्या है upper respiratory tract. तो upper respiratory tract में क्या मिलेगा? यहाँ पे nose यानी कि नाक, nostrils मिलेगा और mouth मुंह मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हवा है, हवा अंदर घुस जाएगा. और कहाँ पे चला जाएगा लंग्स पे चला जाएगा ठीक है अच्छे से मतलब लंग्स पे जाने के लिए हवा अंदर घुस जाएगा नेक्स्ट इज nasal passage or nasal cavity this one so same thing here also like the air passes inside this nasal passage or nasal cavity so that they can so that the air can go inside the lungs तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट सेम है मतलब नेजल पैसेज और नेजल कैविटी पे क्या होगा यहाँ पे जो हवा है जो नोज से आ रहा है नोस्ट्रिल से आ रहा है ये यहाँ पे आके सेम थिंग होगा मतलब लंग्स पे जाने के लिए हवा अंदर घुस जाएगा ओके इज इट क्लियर Yes, ma'am. okay next is sinus or else sinuses so what happens here means there is a hole in between the bones in the head understand here there is a hole in between the bones this is the bones right so in between the bones there is a hole so what happens here in this hole the air enters inside this hole and with the help of this as the air passes through this hole what happens the temperature suppose the air is too how to say too cold or too hot so what happens here they will make it adjustable so that your body will be able to adjust the temperature so this these sinuses they helps in maintaining the temperature it helps in keeping the temperature balance so that your body will be able to adjust with the temperature when you inhale air right so for your body like to be adjustable with the temperature
This sinus, they helps in maintaining the humidity of the air. Is it clear? So you will find all these sinuses. It is frontal sinus. You will find here in the frontal sinus. This is ethmoid sinus, um, and this is maxillary sinus, and next is sphenoid sinus, which you will find here. So this, with the help of all these sinus, like your body will be able to adjust with the temperature, whatever will come inside your body. Whenever you inhale air, like they will be able to adjust with the temperature. Is it clear? So next क्या है sinuses. तो sinuses पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग के सर पे बोन्स है, और वो बोन्स पे क्या है, छोटा सा छेद है, ठीक है। तो वो छेद पे क्या होगा, यहाँ पे हवा घुस जाएगा। तो वो जो हवा तुम मतलब जो सांस, जब सांस लेते हो जो हवा जो अंदर घुसता है, वहां पे क्या होगा, जो मतलब टेम्परेचर बैलेंस करने में मदद करता है। यानी कि अगर मतलब बैलेंस, ज्यादा ठंडा भी नहीं, ज्यादा मतलब गर्म भी नहीं, मतलब बैलेंस, ताकि तुम्हारा मतलब बॉडी एडजस्ट कर सके, वो टेम्परेचर ह्यूमिड करता है, मतलब बैलेंस कर देता है, ठीक है। और हम लोग को बहुत सारा साइनसेस मिलेगा। फ्रंटल साइनस यहाँ पे मिलेगा, इथमॉइड यहाँ पे, और मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे, और स्पिनॉइड साइनस यहाँ पे। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So next is throat or else pharynx. Okay, let me show you. This one. Can you see it? Pharynx. It is also known as throat. Can you see it? Pharynx. Yes, ma'am. Okay. So what happens here? Okay. So in Ma'am, the all these diagrams is necessary to be drawn in a practical notebook. yes, in practical you need to draw. Even for your theory also you need to draw. Okay, ma'am. Okay, so next is throat or else pharynx. So same thing in this throat and pharynx also, like the air will pass through this, so that it will go inside the lungs. Understand? So that it will go inside the lungs. तो throat और pharynx मतलब सेम ही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हवा तुम लोग जो सांस लेते हो, सांस लेते समय अंदर, तो मतलब जो हवा है वो लंग्स पे जाने के लिए मतलब मदद करता है, सेम ही है। नेक्स्ट इज वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स. So this one, larynx, or else it is also known as voice box. So in what happens here in this larynx or voice box? Uh, you remember, right, in the GIT, that is the gastrointestinal tract or else digestive system. When you take in food, what happens? It enters in the esophagus, right? So this larynx, what happens here? The larynx, they will stay away from the food and the whatever you take inside, right? But whatever you drink, whatever you eat, this larynx, they stay away from all those things. I mean, they won't harm, they won't cause any troublesome to all the food or else the drinks, whatever you take inside, right? Because they are not connected. Esophagus and larynx are not connected, they are separate. So that's why they won't get disturbed. Is it clear? Don't think like while eating food, while having food, it will come to the larynx. No, it's not like that. Because they are separate. Are you clear? Because the larynx and the esophagus are separate. So that's why they won't cause any harm. They will do their own work.
Okay. And in this larynx, what happens? Same thing. The air will pass through this, and it will go to the lungs. नेक्स्ट क्या है? लैरिंग्स, उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब सेम थिंग, मतलब यहाँ पे हवा लंग्स पे जाने के लिए मदद करता है। और लैरिंग्स यहाँ पे क्या होगा? तुम लोग को याद है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहां पे जब तुम लोग खाना खाते हो या कुछ पीते हो, क्या होगा? इसोफेगस और लैरिंग्स अलग अलग वो है, पैसेज है, अलग अलग रास्ता है। लैरिंग्स का काम अलग है और इसोफेगस का काम अलग है। तो जब तुम खाना खाओगे या कुछ पियोगे, ये लैरिंग्स पे नहीं जाएगा, ठीक है? ये अपना काम खुद करेगा। ये लैरिंग्स का काम क्या है? सिर्फ हवा अंदर आने के लिए, और इसोफेगस खाना घुसने के लिए। तो मतलब कंफ्यूज मत होना लैरिंग्स और इसोफेगस के बीच में। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so next is lower respiratory tract. So in the lower respiratory tract, what will you find? You will find lungs, you will find trachea. This is trachea. It is also known as windpipe. Okay, it is also known as windpipe. Next is bronchi. So this is bronchi, primary bronchi. Next is bronchioles. All these are bronchioles. Okay, just like branches, they are bronchioles. And next is alveoli. Alveoli, they are very small. They are just like a grapes, you can say, which are like, they all come together. Okay, we will see one by one. तो यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हम लोगों को क्या क्या मिलता है? यहाँ पे लंग्स मिलेगा। ये जो लंग्स, दो लंग्स, एक दो, राइट साइड लेफ्ट साइड, दोनों साइड। नेक्स्ट क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई है। नेक्स्ट क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ये सब है जो ब्रांचेस के जैसा है ना, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और लास्ट क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब छोटा छोटा है, वो लोग अंगूर का जैसा है, मतलब ग्रेप्स का जैसा है। ठीक है, मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी इसके बारे में। So first is trachea. So this is trachea. So trachea, it is also known as a windpipe. Trachea, windpipe भी बोलते हैं। So this trachea, it is a passage in between your throat. This is your throat, and in between your lungs. This one. The trachea, it lies in between your throat and your lungs. तो ये जो trachea है, ये throat, ये यहाँ पे throat है, ठीक है, और lungs के बीच में होता है, और इसको windpipe भी बोलता है। Next is bronchial tubes. So bronchial tubes, where is it? It lies at both sides of your lungs. Understand? Both sides. It is right side and left side, and they're attached with the lungs. This bronchial tubes, they're attached to both sides of your lungs. Okay, 1, 2, right side and left side, to each side of your lungs. तो ये bronchial tubes, ये जो lungs है, दोनों lungs के मतलब connected है। Okay, एक दो, right side और left side, दोनों sides. So next is lungs. So the lungs, you will find two lungs are there, and here what usually happens, there is a removal of oxygen. Okay, removal of oxygen from the air, and they will pass where? They will pass into the blood. तो lungs पे क्या मिलेगा? दो lungs मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव होता है एयर पे, मतलब हवा पे, और कहाँ चला जाता है? ब्लड पे चला जाता है। Is it clear, everyone?
Okay, next is system of respiration. What happens during the time of respiration? Let us see. So what happens from the lungs, that is from both sides of your lungs, what will happen? Oxygen will come out. I mean, oxygen will be delivered with the help of what? With the help of the bloodstream. With the help of the bloodstream, it will be delivered and it will go where? It will go to all the parts of your organs and as well as your tissues. Is it clear? So I'll repeat again. So from your lungs, I mean, in the lungs, what will happen? Oxygen will be delivered. They will be delivered. Oxygen will be delivered, and it will go where? It will go to the bloodstream. It will go through the bloodstream. You can say that. It will go through the bloodstream. Where it will go? It will go to your organs as well as your tissues. Understand? तो यहाँ पे क्या होगा? सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जब रेस्पिरेशन होता है क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर्ड होता है, मतलब ऑक्सीजन चला जाता है। कैसे? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा चला जाता है। कैसे जाता है? ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अनेक अनेक अंग में चला जाता है। और कहाँ पे जाएगा? टिश्यूज, हमारे टिश्यूज पे मतलब ऑक्सीजन रिसीव करता है, वहां पे भी ऑक्सीजन चला जाएगा, टिश्यूज पे भी और ऑर्गन्स पे भी। The oxygen will go to both sides, it is organs and as well as the tissues, with the help of what? With the help of the bloodstream. And who plays an important part in the respiratory system? Your muscles and the bones. Your muscles and the bones, they helps you in, they helps you when you respirate, when you breathe in, when you respirate. So the muscles and your bones, they helps the air to move in and out. तो मसल्स और बोन्स जो है ये मतलब जब हवा आ जाता है अंदर बाहर, तो ये मसल्स और बोन्स के मदद के वजह से हम लोग सांस अच्छे से ले सकते हैं। तो मसल्स में कौन सा वाला मसल्स है जो कि हम लोग का मदद करता है? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम हम लोग का लंग्स को मदद करता है। कैसे मदद करता है? जब तुम हवा अंदर लेके आते हो और जब तुम हवा बाहर लेके जाते हो, तभी ये मदद करता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिब्स मतलब बोन्स। तो ये रिब्स में क्या होगा? ये रिब्स मतलब हम लोग का लंग्स और हार्ट मतलब अच्छे पोजीशन में रहने के लिए, अच्छे जगह पे रहने के लिए, अपना जगह पे अच्छे से रहने के लिए ये रिब्स जो है इसका मदद करता है। So the muscles and the bones, they helps the air to move in, that is moving in and moving out. And what type of muscles is responsible for helping the person to breathe? Diaphragm. So the diaphragm helps in it. So the diaphragm, what does it do? They helps your lungs to take in oxygen and to breathe out carbon dioxide. Is it clear? The diaphragm, they helps in moving in and taking out carbon dioxide. And next is in bones, who is like responsible for, respiratory system? Your ribs. Your ribs, what do they do? The ribs or else the bones, they helps the lungs to be in the place. They used to surround the lungs so that they will be in the place and it will be like functioning normally or else properly. Is it clear? This part? Yes, ma'am. Please repeat diaphragm. Diaphragm. Wait, let me show you. This is a diaphragm, huh? This is this one. So in the system of respiration, two things will help you. One is your muscle, that is this diaphragm,
and one is the bones, which is this ribs. You remember, right? In bones, I have taught you ribs. So two things will play an important role. First is diaphragm, that is the muscles, and next is the bones, that is ribs. Ribs, R-I-B-S, ribs. So this diaphragm, that is the muscle, they helps in what? They helps in taking in oxygen and breathing out carbon dioxide. I mean, they help the diaphragm to contract, okay, to contract and to relax. Is it clear? Yes, ma'am. Himanshu, Yes. yeah? Okay. They helps in that. They help the diaphragm to contract and the diaphragm to relax. So that is the part of muscles. So what is the another part of bones? Ribs. This is the ribs. Okay, so the ribs they helps the lungs as well as the heart. Mainly we will be focusing on the lungs because we are talking about the lungs, right? So they will help the lungs. I mean to stay in the proper place. Okay, is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next is this. So what happens here when you breathe out? What happens? Your blood they carries carbon dioxide and as well as all the waste products which is inside your body. Okay, and in this, what will you find in your lungs? You will find inside the lungs. What will you find? You will find alveoli and bronchioles. So this is the bronchioles. This is you will find this one inside the lungs. Understand? This is just we are zooming. We are zooming in, so it's appearing in this way. Don't get confused. तो ये जो लंग्स है ये हम लोग जूम कर रहे हैं तो ये इसलिए ऐसे आ रहा है तो लंग्स के अंदर में ये सब मिलता है bronchioles alveoli ये सब ठीक है so okay let us now discuss about alveoli. So alveoli, all these are alveoli. Alveoli, they are just like a grapes, I've already said. They all will stay together and they are small, very tiny. Okay, they are very tiny. And what happens here? They are like air sac. I mean, air is inside this alveoli. So what type of air is there? Uh, I mean, oxygen and carbon dioxide. Exchange of gas takes place here. Okay, exchange of gas such as carbon dioxide and water takes place inside the alveoli. Next is bronchioles. So this is bronchioles. So bronchioles, where do they lie? I mean where they are situated? Just next to the alveoli, they are there, and they are just like the branches. So they are just like the branches. Next क्या है? System of respiration पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लोग जो गैस बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो अच्छे नहीं है वो बाहर हम लोग निकलता है. और यहाँ पे क्या मिलेगा? लंग्स. इसके अंदर लंग्स है मतलब ये जो लंग्स है यहाँ हम लोग जूम करें तो यहाँ पे ब्रोंकियल्स और एल्वियोलाई मिलता है. तो ये एल्वियोलाई क्या है? ये एल्वियोलाई छोटा छोटा राउंड करके ग्रेप्स का जैसा है. ठीक है, अंगूर का जैसा है, एक साथ होता है वो लोग. और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हवा आता है और यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है. ठीक है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है ऑक्सीजन. तो ये दोनों गैस एक्सचेंज होता है ये एल्वियोलाई के अंदर. और नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकियल. ब्रोंकियल मतलब ब्रांचेस का जैसा है और ये ठीक एल्वियोलाई के पास में ही है ये ब्रोंकियल्स. समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Okay, next is capillaries. So these are the capillaries. This is blue color and red color. So these are the capillaries. They surround the alveoli. तो ये alveoli है कि नहीं? ये grapes के जैसे मैंने बोला था ना एक साथ है. तो ये मतलब
कैपिलरीज कवर करता है, मतलब उसको धकेल देता है, ठीक है। और सेम थिंग यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होता है। तो here also same thing, you will find there will be exchange of gas such as oxygen and carbon dioxide in the capillaries also. Okay, is it clear? Is it clear everyone till here? Yes, ma'am. Okay. Okay then, that's all for today's class.